Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are well at home. So today I am explaining the chapter first of chemistry of class 9, that is matter in our surroundings. So first we need to understand the term matter. What is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ले रही है और उसका कोई मास है, इट मीन्स उसका कोई वेट है, इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जाम्पल लाइक चेयर, दे ऑक्यूपाई द स्पेस एंड it has also a mass, so it is considered as matter. So I hope you are cleared with matter. एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को और उसका कोई मास भी है, मास इट मीन्स उसका कोई वेट है, इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जाम्पल यू हैव बेंच, डेस्क, you can say that all are matter because they are occupying the space and has mass, is called matter. Surroundings you all know, that is our surroundings, आस पास का हमारा एरिया is considered as surrounding. So जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब मैटर है पार्टिकल्स से बना होता है. इज इट क्लियर? नाउ वट वी हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर की. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स में स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है. मैटर पार्टिकल्स से बना होता है और उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि जो मैटर है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होता है उनके बीच में. सेकेंड इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली दे आर मूविंग. नाउ थर्ड इज द करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. सेकेंड, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. थर्ड, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट करते हैं. नाउ देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज द गैसियस स्टेट. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज द लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज द गैसियस स्टेट. Now I am showing you the solid state, in which the particles are very tightly packed, in which no space between the particles. You can easily see that there is no space between the particles. The particles of the solid are tightly packed. They are very closely packed to each other. So that is the diagram of solid. In solid you can say that desk is a solid. So the particles of the desk are closely, very closely combined like this. Okay, now second state is liquid state. Liquid state में जो particles होते हैं उनमें space होता है between the particles as compared to solid. You can easily compare the solid and liquid diagrams. You can see that in this solid they are very tightly packed, but in the liquid they are loosely packed as compared to solid. Is it clear? Now they are the particles. They are the particles of matter. Okay, now third state we know, that is the gaseous state, in which the particles are very loosely packed as compared to liquid and solid. Also the particles of gaseous state is very loosely packed. So you can easily compare the 3 diagrams very clearly. You can see in the solid state these are the very tightly packed. You can see in the liquid these are the loosely packed as compared to solid, but not as compared to the gaseous state. Or you can see in the gaseous state these particles are very loosely packed as compared to solid and liquid also. So thank you guys. If you like my channel, so share and subscribe.